AFLPs, detection in the absence of sequence information. Another technique that is valuable for the mapping of genomic DNA, it is AFLPs. You have the basic background of AFLPs, that is amplified fragment length polymorphism. It is also a type of DNA fingerprinting technique like the RFLP. Although they are working on the same pattern, but there are also differences. मिसाल के तौर पे RFLP में जब DNA फ्रेगमेंट जेल पे सेपरेट होते हैं तो उसको सदर्न ब्लॉटिंग से डिटेक्ट किया जाता है, जबकि AFLP के केस में जीनोमिक DNA जो हैं उनकी डाइजेशन के बाद विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आते हैं दे आर detected by using site specific primers. So this is the basic difference. AFLP, they are not mainly preferred for the mapping of mammalian genome. Rather it is most suited for animal genome, bacterial or viral genome. Now what is the basic protocol for the detection of fragments by using AFLP technique or procedure? Here, the genomic DNA that we want to map, it is isolated, and as usual, it is digested with using a set of restriction enzymes. Suppose here we have used two set of enzymes like EQR1 or MSC1 restriction enzymes. If you remember, EQR1 जो है ये ऐसा टारगेट साइट को सिलेक्ट करता है जो कि 6 बेस पेयर्स हो एंड इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स. इसी तरह से जो MSE1 है ये एंजाइम ऐसा सीक्वेंस रिकग्नाइज करता है और इट सेलेक्ट टारगेट साइट दैट इज 4 बेस पेयर लॉन्ग. In either case, if we will treat genomic DNA with two restriction enzymes as EQR1 or MSE1, so short fragments of DNA will be generated with sticky ends. When sticky ends are produced, then they can be ligated with adapter molecules. Adapter synthetic DNA के fragments होते हैं that may contain sticky end. तो ये स्टिकी एंड होने की वजह से जो शॉर्ट DNA के फ्रेगमेंट्स जनरेट हुए हैं उनके साथ ये बाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन की वजह से. तो नो द सीक्वेंस ऑफ द एंड्स ऑफ द DNA fragment it is now known so that we can now develop a site specific primers by using the sequence of the adapter molecule. तो उसके बाद इसकी हम एम्पलीफिकेशन करते हैं और एम्पलीफिकेशन के बाद हम DNA के फ्रेगमेंट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं. अगर हम इसका रिएक्शन मिक्सचर देखें तो इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाता है. टू सक्सेसिव स्टेप्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन PCR रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप में जो स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक प्राइमर्स जो हैं इसमें हम एक बेस जो है वो एडिशनल ऐड कर देते हैं और इसी तरह से जब उसका PCR मुकम्मल होता है तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ फ्रेगमेंट्स एम्पलीफिकेशन से आता है जो सेकंड रिएक्शन है उसमें जो हम साइट स्पेसिफिक प्राइमर डेवलप करते हैं उसमें 2 से 3 बेसेस जो हैं वो हम मज़ीद ऐड कर देते हैं. तो इसका एडवांटेज जो है वो ये होता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ़ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होने जा रहे होते हैं उसकी जो स्पेसिफिसिटी है प्राइमर की वजह से या उसका जो नंबर है वो कम हो जाता है. तो इस तरह से DNA के फ्रेगमेंट्स जेल के ऊपर ईजिली रिजॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ जीनोमिक DNA that we want to map, and here one site is here for EQR1 and another site which is 4 base pair long, it is for another enzyme which is MSE1. So a set of enzyme it is used to digest the DNA molecules and then sticky ends they are produced and then they are ligated with EQR1 adapter here and MSE1 adapter so that now
we can amplify this DNA fragments. But in the first reaction, we add first primer with one selective nucleotide. How? So one selective nucleotide is added. For example, here with normal sequence of the primer, another base is added, like adenine here and cytosine for another primer, so that the number of fragments it will be reduced. So the fragments that are produced after the first reaction, then second successive reaction is performed, but now more selective bases are added, like 3AAC for EcoR1 adapter, and likewise here for MSE1 adapter. And it will lead for selective amplification. And then the DNA fragments that will be produced, they will be analyzed by agarose gel electrophoresis. Simply we can say that AFLP, it is a very good technique for the mapping of genomic DNA, and it can be applied for a wide variety of genomic DNA, and the use of some selective bases in the first PCR reaction, and then the 2 to 3 bases for the next PCR reaction. It can reduce the number of fragments that will be produced, and they can be easily resolved on the gel.